Thank you, guys, and welcome to E2P. And it's very funny that I can't see anybody but myself. It's strange, but we are used to now from last 2 years talking like this, talking to ourselves. In fact, mm, okay, English, Hindi mix. What is okay? What exactly is okay? Mix okay? Okay, तो mix करता हूँ, right? So you know, I was just thinking कि मैं तो किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, किससे बात करूंगा? फिर याद आया कि एक्चुअली मैं from last 12, 13 years, जब भी as a speaker, most of the people when they go on stage, and I remember my time when I went on the stage for the first time, second time, or continuously after that, एक चीज रियलाइज हुई कि एक्चुअली हम किसी और से बात करते ही नहीं, हम तो खुद से बात कर रहे होते हैं वहां पे, सो जो किया है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो हमको और आगे करना उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, करेक्ट? So किसी और से बात, in fact, most of the speaker, I don't know how many people can relate to this, but I'm sure people who are speaking in different forums, I'm sure, and they are still in the journey. Actually, they still want to grow further, and they're not thinking that they arrived. They always talk to themselves, not to anyone else. So then I said, ठीक है यार, कोई किसी की शक्ल नहीं भी दिख रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं. I will talk to myself, right? Correct? Huh? So I can see now. Of course, I can see a gallery now. I can see a few people. So good. And one second. Yeah. So now they were talking about what to do. In edification, he was talking about he will tell you what to do in the business. But kya karna actually? Okay, by the way, I'm not going to do like a module, okay? Because we are not in the big stage on the, Thailand or Malaysia somewhere where people are screaming and all that, right? There's no show here, right? I am talking to you as if I am talking to you one-on-one. And I love one-on-one because that's what it is. Even when I'm talking to 20,000 people at the same time, it is as good as one-on-one for me. I will pick up one or two people sitting in the front and I'll talk to them. बाकी लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, right? So consider as if I'm talking to you one-on-one, right? Okay? As if we are having a chai, and we are talking one-on-one. So I'm not going to do module. I'm not going to do hi-fi, kuch to prepare karke aake and all that, right? Nothing. Okay? I'm going to talk to you heart to heart, right? Is that okay? Correct? Perfectly okay. Okay? Because I'm not a speaker by profession. I'm not a trainer by profession. Okay? In fact, if I remember my school or college days, I never participated into anything where more than two people used to listen to me. तो कभी कोई डिबेट, कभी कोई रेसिप, कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट? True. So here we are talking heart to heart, one-on-one. I'm going to tell you what is my experience in last so many years in this business, right? I don't know how it is going to help you, correct? Probably it may or may not be able to help you, right? But I'm going to tell you what exactly I learned so that if you're smart, you will learn from my mistakes or you learn from my experience, right? Okay? People who have common sense, they learn from their own mistakes, right? But people who are smart, they learn from others' mistakes, right? So you decide whether you have a common sense or you're smart. And third category, I don't want to talk about, right? उनको common sense भी नहीं होता उनके पास, right? So I'm considering that all the people sitting out here, at least they have common sense or they are smart, right? So that's what, right? So what exactly, when my way of telling you what is to be done is only by sharing what I did when I look back my journey, right? Okay. So, so people who think I was extraordinary guy, how many people think that, okay, I was extraordinary guy or I am an extraordinary guy? How many people think like this, right? Oh, he's extraordinary, right? How many people think? दिल पे हाथ रख के बोलो, कितने लोगों को लगता है यार ये तो सही आदमी है यार, गजब है टाइप से? कितने लोगों को लगता है? कितने लोग? हाँ? और कितने लोगों को लगता है यार कि मैं कैसे वैसा बन पाऊंगा ऐसे? मुझे भी ऐसे ही लगता था मालूम है, जब मैं मेरे अपलाइन को देखता था. And in fact, most of you are actually better than me though from that time when I started.
So I was a regular guy, right? Regular means what? Regular means absolutely regular. Small town, father into a government job, living in a government colony where everybody looks same, everybody goes to the same school, which is a sarkari school, KV, केंद्रीय विद्यालय, राइट, सेंटर स्कूल जिसको बोलते हैं लोग, एंड पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते थे हम, सब करते थे। एंड इनफैक्ट माई सेल्फ इमेज अबाउट माई सेल्फ वॉज कि मैं अगर कहीं कॉलोनी में निकल के जा रहा हूँ ना, और दो आंटी लोग अगर खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, तो मेरी सेल्फ इमेज ये थी कि वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये आ गया, अपने बच्चे को अंदर लेके जाओ, बिगाड़ देगा नहीं तो। ऐसी सेल्फ इमेज थी मेरी, खुद को लेकर। एंड आई नेवर, मैं क्लास में कभी भी फर्स्ट नहीं आया, कभी भी फर्स्ट नहीं आया, कभी कोशिश भी नहीं की एक्चुअली, आया नहीं मतलब आना ही नहीं था, कभी कोशिश भी नहीं करी। सो आई वाज अ प्रीटी मच रेगुलर गाय, बीच वाला होता है ना जिससे, एकदम ना पीछे ना आगे, भीड़ में छुपे रहने वाले भाई। आई वाज लाइक दैट एक्चुअली, राइट? आई वाज एब्सोल्युटली लाइक दैट। बट व्हेन आई लुक बैक, आई वाज अ रेगुलर गाय, बट आई वाज नॉट हैविंग, मेरी ना एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था हमेशा। कभी ये नहीं लगता था कि ये काम नहीं कर सकते, भले ही दूसरों को लगता हो काम नहीं कर सकते, बट खुद को नहीं लगता था भाई, यू नो। कभी भी कभी सेल्फ डाउट नहीं होता था, कभी ठीक है पढ़ाई नहीं करते थे, नंबर नहीं आते थे, इसके लिए नहीं आते थे क्योंकि पढ़ते नहीं थे, राइट? बट ये नहीं था कि हम नहीं ला सकते हैं, राइट? कभी वो अकर ही नहीं करता था कि अच्छा लाने भी चाहिए अच्छे नंबर, क्यों लाना है, कोई रीजन ही नहीं था हमारे पास में, कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ परफॉर्म करने के लिए कोई रीजन ही नहीं था। सो हैप्पी गो लकी लाइफ चल रही थी, हैप्पी गो लकी लाइफ। एंड आई वाज लाइक दिस टिल 20 इयर्स ऑफ माय एज, बिलीव मी, राइट? 20 साल तक मैं ऐसे ही था, ग्रेजुएशन तक मैं ऐसा ही था, सॉरी 18 साल में ग्रेजुएशन हो गया था, 18-19 तक मैं ऐसा ही था, यू नो। मतलब माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कुछ तो कर लो यार, कभी तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में, करेक्ट? एंड मुझे पता ही नहीं था करना क्या लाइफ, क्योंकि छोटा शहर, नो इंटरनेट दैट टाइम, नो सैटेलाइट टीवी, तो बस दोस्त यार, क्रिकेट, घूमना फिरना, मस्ती मटर गस्ती, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। सो कोई एक्सपोजर भी नहीं था, आई वाज नॉट टू स्मार्ट आल्सो, बिकॉज़ बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं मिला था, करेक्ट? केवी में थे तो ना ठीक से हिंदी आती थी ना ठीक से इंग्लिश आती थी, बात कर लेते थे बस कुछ तो, क्योंकि दोस्तों के साथ बकरी करना है ना। सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली आई यूज्ड टू बी, रेगुलर गाय, राइट? रेगुलर, वेरी मच रेगुलर एक्चुअली, राइट? बट ड्रीम बड़े बड़े थे। ड्रीम मतलब कभी ये नहीं सोचते कि हम तो इस चीज के लिए बने नहीं है, हम इस लायक नहीं है। एटीट्यूड सही था हमेशा से, यू नो। स्केप्टिक नहीं था मैं, किसी चीज पे डाउट नहीं करता था, और आज भी नहीं करता हूँ एक्चुअली, आज भी नहीं करता हूँ, डाउट नहीं करता। अगर कोई चीज जम गई ना तो जम गई, फालतू के ना, अच्छा किसी इंसान के ऊपर या किसी बिजनेस के ऊपर या किसी प्रोसेस के ऊपर खामा का डाउट नहीं करता, मैं नहीं करता इसमें, यू नो। कई बार कुछ लोग बोलते भी कैसा आदमी है यार, सब चीज मान लेता है किसी की, बट ठीक है, कभी कभार शायद उसमें नुकसान भी होता है, बट आई एम नॉट अ स्केप्टिक पर्सन, आई एम अ बिलीवर। आई बिलीव इन एवरीवन, आई बिलीव इन एवरीथिंग एक्चुअली, दैट्स हाउ एग्जैक्टली गॉड मेड मी, राइट? दैट वाज द ओनली क्वालिटी, राइट? ओके। और कचरा नहीं आने दिया कहीं से, जो इनोसेंस थी ना, वो इनोसेंस बरकरार थी, वो इनोसेंस थी। तो इनोसेंस के साथ में बढ़ते गए, बढ़ते गए, नॉन जजमेंटल थे, कभी किसी को जज नहीं करते, यू नो, ये ऐसा वो वैसा फलाना ढिमका, बड़ा हैप्पी गो लकी चाइल्डहुड था। ओके, हार्ड वर्किंग थे, बिकॉज फिर फादर को देखा था हार्ड वर्क करते हुए, रेडी टू लर्न था, कुछ नया सीखने को तैयार थे, राइट? ओके। तो कुछ हाई फाई सोसाइटी से कोई एक्सपोजर नहीं था, बड़ी सिटी नहीं थी, यू नो। तो दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, राइट? फिर बॉम्बे पहुंच के काम तो करना था, फादर रिटायर होने वाले थे, तो थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, जो कुछ भी आया सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, यू नो। कभी सिखाने की कोशिश नहीं करी, खुद सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, अप्लाई करते गए, और ऑलवेज बिलीव था हम तो आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं। सो इनोसेंस वाज दैट वेयर इन कोई कचरा नहीं आता था, अच्छा हमने ये किया तो ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, दिमाग नहीं लगता, दिल लगता था, दिल, हार्ट। बॉम्बे पहुंच गए, कुछ नहीं आता था, ट्रेन में चढ़ना भी सीख गए, उतरना भी सीख गए, नौकरी करना भी सीख गए, नौकरी में बम्बू पड़ा पहले साल में, फिर वहां पे भी सीख गए सब कुछ, आगे वहां परफॉर्म करना भी सीख गए। Because every stage I was ready to learn. I was not blaming other people, right? I was busy learning and improving myself, right? I was not blaming anybody else, right? So when I look back in my journey, so smartness नहीं थी, कुछ नहीं था, बट ये वाली क्वालिटी जो थी ना,
not being skeptic, not doubting on other people, not judging anybody, easy going actually, okay, learning all the time. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मैनेजर बन गए तो बस अब तो हम बहुत तो बन गए, फिर और आगे बढ़ना, और सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं, राइट? सो इट वाज यू नो एक इनोसेंस था, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली इवन व्हेन बिजनेस चालू हुआ था तो भी ऐसी था। बिजनेस चालू हुआ तो जॉब में तो अच्छा ही कर रहे थे, पैसे बचते नहीं थे, वो बात और है, लेकिन एक इनोसेंस था कि ये चीज मुझे नहीं आती है, चलो करेंगे, यू नो। एंड टुडे आल्सो आई एम प्राउड टू एक्चुअली लुक एट माई सेल्फ एंड फील आई एम स्टिल इनोसेंट एक्चुअली। No matter what I achieve, I don't want this innocence to go ever actually. You know? मतलब excited like a child all the time for any damn thing, any new thing actually. All the time. Not being skeptic for anything in life. Right? Situation आती है, चलो इसमें से पॉजिटिविटी क्या वो निकालते हैं, इसमें से इसके ऊपर काम करते हैं जिस चीज को करो, राइट? And that's how exactly I was. And that's what exactly helped me to be here, right? You know? I never needed anyone else to uplift me because my own attitude was uplifting always, right? क्योंकि ज्यादा करके क्या होता है ना, आपको कोई और पुल डाउन नहीं करता, आप खुद ही पुल डाउन कर लेते हैं, आपके थॉट्स ही आपको पुल डाउन कर लेते हैं, करेक्ट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, धीरे धीरे जब पहला साल जब निकल रहा था बिजनेस में, फर्स्ट ईयर, आई वाज नोइंग दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट आई वांट। क्या चाहिए था मुझे? फ्रीडम चाहिए। 10 साल जॉब के हो चुके थे ऑलरेडी, बट फ्रीडम तो नहीं मिलेगी जॉब से, कुछ भी कर लो, सीईओ बन जाएंगे तो भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। सो आई लेफ्ट माई जॉब। आफ्टर दैट ऑल्सो इट वॉज नॉट ग्रोइंग द वे इट शुड ग्रो। ऑब्वियसली 4 महीने में नौकरी छोड़ने का, यू नो, इट्स लाइक आपके पास पैसे आ गए, आपने फरारी खरीद ली, लेकिन आपको गाड़ी चलाते ही नहीं आती है, तो कैसे चलाओगे? तो वही हालत था मेरी। बिजनेस तो आ गया, विच इज फरारी, राइट? नौकरी भी छोड़ दी, राइट? लेकिन गाड़ी चलाते ही नहीं आती है, पूरा दिन आपके पास पड़ा है, बट फिर भी आप फालतू में बैठोगे तो ठोकोगे इधर उधर, राइट? तो धीरे धीरे चलेगी ना शुरू में तो, ट्रू। सो आई वाज मेरी गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी, बट जब वो धीरे धीरे चल रही थी ना, माई दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, ओके, ऑलवेज विजुअलाइजिंग व्हाट इज कमिंग, what is going to happen, what is going, not thinking about what I have today, but also thinking about what I can have actually, right? Okay, that was helping me. And जो सीखना शुरू किया, I was not knowing about law of attraction, I was not knowing about visualization, ये सब बिजनेस में सिस्टम में भी कोई नहीं सिखाता था, क्योंकि वेलकम ही नहीं होता था उस टाइम। वो वेलकम मैंने बनाया जो आज चल रहा होता है, ट्रू। तो कोई तो एक ट्रेनिंग अटेंड करी, कोई रैंडम स्पीकर था, कोई प्राइवेट किसी ने बोल दिया चलो यहाँ चले जाते, चले गए, उसने कुछ बताया, चलो अप्लाई कर लेते। अच्छा, मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा आदमी है, उसने खुद ने क्या हासिल किया, लेकिन जो बात कर रहा है ना वो मजे अच्छी वाली बात कर रहा है, चलो इसको अप्लाई करते हैं लाइफ। And I started applying. I started visualizing every day. He told me, don't think what you have, think always what you want actually. I started visualizing that on daily basis, every night while sleeping in the bed, because I'm not tired. Because काम ही नहीं हो रहा है, ज्यादा टीम ही नहीं है बड़ी, राइट? लेकिन नौकरी छोड़ चुके हैं, तो दिमाग में क्या आएगा? नेगेटिविटी आती है ना। तो आई सेड नो, दिस आई हैव टू स्टॉप, राइट? So I started visualizing the perfect day of my life. Every night for 1-1.5 घंटा visualization करके सोता था, हर रोज for 1 year, करेक्ट? तो वो एक कंसिस्टेंसी डेवलप हो गई। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक्शन मेरे हाथ में, बाकी रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। I will not think about result, I'll only take action, right? I said, okay, I will make 5 phone calls every day, which I was not doing before, right? Then I said, okay, now my numbers are getting over, so I need to take 3 numbers every day, right? That's how that 5 + 3 came out. कि कितना भी बिजी क्यों ना हो, 5 + 3 तो कर ही सकते हैं, राइट? ओके, एंड देन when I was not consistent on that, I said, okay, I will not take my dinner till the time I don't do this, right? Okay, at times it used to happen, मैं डिनर टेबल पे बैठा हूँ, 3 नाम ऐड नहीं किया है, पान टपरी पे जाता, that time I used to smoke, right? So I used to go down पान टपरी पे, वहां पे अलग अलग नंबर की गाड़ियां आती थी, बाइक, कोई एमपी का, कोई यूपी का, अरे भैया किधर के हो, क्या, अरे नंबर किधर का है, वो नंबर एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, उनको कॉल कभी नहीं किया बाद में, बिकॉज मैंने डिसाइड किया था 3 नंबर ऐड करने, बाद में है ना, कॉल करने वाला बाद में, ओके? नहीं तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, अब इनको तो ये तो कोई काम के नहीं है, अब इनका नंबर लेने से क्या मतलब है। I decided I will take 3 numbers because I want to become a networker, right? I was not a networker, right? Because when I used to take 3 numbers, I was comfortable. I was getting comfortable talking to anyone and everyone, right? May not be about business, but breaking the ice, right? No? So that learning was there. Then I decided I will never miss the system, right?
Never ever miss the system in any circumstances, right? Any circumstances. I still remember my first week on when I came back, सेम फ्लाइट में वो बड़े बड़े लोग थे जो मॉड्यूल लिया करते थे सिस्टम में, हमारी फ्लाइट में आए थे, वो लोग सिस्टम नहीं पहुंचे थे, लैंड करने का मैं सिस्टम में पहुंच गया। क्योंकि ना मुझे ना हमेशा वो लगता, वो बचपन में बोला था ना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, जैसे बोल के डरा देते थे, राइट? तो सिस्टम में नहीं जाएंगे ना, एक सिस्टम भी मिस किया ना तो 6 महीने पीछे हो जाएंगे, तो वो दिमाग में घुस गया था मेरे, करेक्ट? सो सिस्टम में जाना शुरू किया, 5+3 करना शुरू किया, बुक्स नहीं पढ़ते थे, बुक्स पढ़ना शुरू करी, राइट? And I started doing plans. I said, okay, no matter. And you will wonder, पहले 1 साल तक शायद आपके पास में अपलाइन होंगे, वो प्लान करते होंगे आप 6 महीने 1 साल तक, राइट? मेरे साथ उल्टा हुआ। पहले 1 साल तक मेरे पास कोई था ही नहीं जो मेरे प्लान करे, मैं ही खुद के प्लान करता था, कोई नहीं था, राइट? 1 साल के बाद मुझे मेरा अपलाइन मिला है. By that time I was already doing my plan, so he used to just do overview and then I used to do the plan. Correct. But excitement था. Excitement किस बात का था? कुछ तो मिल गया है मुझे, चल नहीं रहा है फास्ट लेकिन कुछ तो मिल गया है. And that excitement में करते 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 after 1 year started taking off, right? Started taking off. But जब take off भी हुआ तो ऐसा नहीं सोचा वाओ अब तो मैं अपलाइन बन गया, अब तो पैसे बनने लगे, right? I was hungry for more work actually, right? I continued doing the same thing. That 5+ से I continued actually, right? Okay. So अगर वो continue नहीं किया होता तो जो आज जो pillars थे organization वो तो आते ही नहीं. Are you getting me, right? For example, मेरे जितने भी, for example, पहले साल में कविता शफुन signed up, but they were not working actually. Right? Second year में they started working. Then after that second year में I got Bijoy Matthew, right? Who was one of the pillar in the organization, right? Okay. Then after that I got Digvijay Singh in third year actually, right? Today they all of them are AVPs and VCs and all that, right? True. ये जितने भी DRs मिले, second, third, fourth, मेरा वियतनाम वाला बंदा चौथे साल में साइन अप हुआ, राइट? फोर्थ ईयर में, और 7वें साल से वो एक्टिव हुआ, 7वें 8वें साल के बाद में अपने खुद के. सो आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई डिड इन दैट फर्स्ट ईयर. ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 साल में जो कर लिया उसको बंद कर देते हैं, आप दूसरा कुछ करने लगते हैं, करेक्ट? सो माय पॉइंट हियर इज दैट फ्यू थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपने जो भी सीख लिया, जो भी आप इस इवेंट से सीख रहे हो, यू नो, ड्रीम, commitment, this, that. The most important thing I'm telling you, the only and only and only qualification criteria to become financially free in this world is to become a consistent character actually. Nothing else is required. Consistent character. Now ask yourself a question. Are you a consistent character actually? I was not knowing that I can be, right? But today, if somebody asks me, what is your biggest strength? I can actually say that my biggest strength is I am consistent in my actions, in my thoughts, and in my words all the time. Actually, right? Not just consistent in action only. Right? So check yourself. Are you talking today something and 1 year back you were talking something else? You were very excited 1 year back and now you're very, sad or not so excited? Were you very positive 1 year back and now full of doubts and skepticism actually, right? You were taking a lot of action 1 year back. Now because of some circumstance and situation, your action has gone down. And if this has happened, that means God is telling you you're not ready to handle that kind of a success actually right now. Right? So the only and only criteria according to me to become financial free is consistent actually. Right? Because if you are not consistent, so many lives cannot be depending on your, on your attitude, right? Are you consistent? Now, consistency कैसे check की जा सकती? सबसे पहली consistency है, देखो, सबसे पहली consistency that इस business में सबसे पहले करना क्या होता है? Talk to people. True? Correct? पहले खुद, talk to people. पहले तो खुद से बात करनी होती है. खुद से बात करते हैं ना? So check your self-talk is consistently negative or positive actually, right? 24 घंटा बात करते हैं ना, उसमें से 20 घंटा तो खुद से बात करते हैं. True or not? How many people talk to themselves? कितने लोग खुद से बात करते हैं? कितने लोग खुद से? जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वो सच्चे हैं, बाकी लोग झूठे हैं एक्चुअली, क्योंकि सारे लोग सब लोग बात करते हैं. True? You talk to yourself. True? So, but when you talk to yourself, imagine if while talking to yourself, सरस्वती माता ऊपर से आए और तथास्तु बोल दें, कभी भी एक्चुअली बोल भी रहे होंगे,
बोल भी रहे होंगे एक्चुअली. That's why exactly you were, maybe some people are in the situation, right? True. So can we actually, एक ऐसा फिल्मों में एक डायलॉग था या कहीं तो भी डायलॉग डायलॉग बोलते हैं ना, बचपन में बोलते थे स्कूल में कि अबे तेरी शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया ना. ऐसे बचपन में बोलते थे किसी को, राइट? तो बात तो अच्छी कर ले, खुद से तो बात अच्छी कर ले, किसी और से नहीं यार, खुद से तो अच्छी बात कर ले, खुद को तो अपलिफ्टेड रखें हमेशा. करेक्ट. So check yourself. Are you consistently doing a self-talk which is in your favor actually? Not blaming, not justifying, not cribbing, not crying, not complaining, excited, thinking about future and positive. Right? Correct? हाँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट इतना आसान होता ना तो पूरी दुनिया जो है ना वो एकदम पॉजिटिविटी भरी होती है. ट्रू. आप पता है इसके ऊपर आपको रोज एफर्ट लगाना पड़ता है और फिर एक टाइम के बाद में आप इस एनर्जी से वाइब्रेट करने लगते हो कि आपके इर्द गिर्द में ना अपोजिट लोग आते ही नहीं है. बिकॉज डू यू नो दैट यूनिवर्स में हर आदमी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? और आपकी जो लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी के लोग आपके पास आते हैं. आप उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी के लोग आपके पास में आते हैं. तो आपको कैसी फ्रीक्वेंसी वाले लोग चाहिए? रोने वाले, सल्क करने वाले, प्रॉब्लम्स देखने वाले, या सॉल्यूशन ओरिएंटेड पीपल, एक्साइटेड पीपल, एनर्जेटिक पीपल? कैसे चाहिए? तो हमको वैसा बनना पड़ेगा. ट्रू. अब वो कैसे बनोगे उसके बहुत सारे तरीके हैं. उसके लिए भी कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए एक्चुअली. कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, राइट? ट्रू. इट कैन बी डन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज, मतलब कोई फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं. जैसे मैं हमेशा हर रोज आई यूज्ड टू वॉच माय थॉट्स एक्चुअली, राइट? करेक्ट. ऑल दोस थिंग्स. एंड बिलीव मी, आप इर्द गिर्द रह ही नहीं सकते हो किसी के अगर वो इंसान उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर रहा ज्यादा लंबे समय तक. गेटिंग मी? तो सबसे पहले तो खुद से क्या बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंटली आर वी टॉकिंग एंड फीडिंग आवर सेल्फ गुड थिंग्स एक्चुअली? हम अपने आप को जहर पिला रहे हैं रोज या अमृत पिला रहे हैं? ये चेक करो कंसिस्टेंटली. हम मतलब आप आज इस इवेंट के बाद में तो सब बढ़िया हो जाएंगे, राइट? राइट. बट 2 दिन के बाद क्या होगा? 4 दिन के बाद क्या होगा? 5 दिन के बाद क्या होगा? चेक योरसेल्फ इन योर एंटायर जर्नी. आर यू कंसिस्टेंट इन योर थॉट्स एक्चुअली? सबसे पहले. उसके बाद सेकंड, आर यू कंसिस्टेंट इन एक्शन? एक्शन क्या लेना है हमको? हमको एक बिजनेस के बारे में पता लगा, हम उसको लेके एक्साइटेड हैं, हम उसको लेके पॉजिटिव हैं, हम उसको लेके विजुलाइज कर रहे हैं, हमको पता है विजन क्या है उसमें, राइट? अब हमको शेयर करना लोगों के साथ. तो क्या करते हैं उसके लिए? हम फोन कॉल करते हैं. करेक्ट. अब वो 5+3 तो एक ठीक है, एक फॉर्मुलेटेड चीज बना दी है मैंने, राइट? 5+3. बट क्या करते हैं? हम कॉल करते हैं, राइट? ट्रू है ना? अब उस एक्शन में भी क्या आप रेगुलर और कंसिस्टेंट हो? मैं नहीं बोल रहा हूं साइन अप हो रहे नहीं. क्या कोई इंसान ऐसा बैठा यहां जिसने पिछले 100 दिन में एक भी दिन 5+3 छोड़ा ना हो? 100 दिन में एक भी दिन, 100 डेज में. मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 100 दिन में भी, राइट? खाना खाया ना 100 दिन में रोज? नहाया ना रोज? पता नहीं कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे होंगे. एनीवे, हाँ, ब्रश किया ना रोज? ट्रू. नो. पेट साफ किया ना रोज? सब कुछ किया, राइट? तो सांस ली ना रोज? सो 5+3 में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? बाकी सब बताओ, बाकी कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है. अगर आपने ये करना सीख लिया कि यार ये तो बच्चों का खेल है, मैं तो आईसीयू में लेटे लेटे भी 5+3 रोज कर सकता हूं. जिस दिन वो लेवल पे पहुंच गए ना, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों से बात करने का, इतना एक्सपीरियंस और इतना लर्निंग मिल जाएगी कि आप बाकी चीजें अपने आप सीख जाओगे. So today I'm talking to you guys. I'm talking to suppose if I'm talking one on one with any IR or any prospect or anyone. कुछ लोग आके बोलते हैं यार यही बात हम समझा रहे थे, नहीं समझे, आपसे समझ गए लोग. करेक्ट. पता है क्यों? सिंपल. इतना 5+3 किया, इतने लोगों से बात किया ना कि ऑटोमेटिकली ह्यूमन इंटरैक्शन की स्किल अपने आप आ जाती है.
उसकी कोई गोली नहीं होती है, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो जितनी ज्यादा साइकिल चलाते हो उतना हैंडल छोड़ के भी चलाना सीख जाते हो उसके बाद, राइट? करेक्ट, प्रैक्टिस होती है ना, यू नो। सो बस, सो पॉइंट ये है कि आर यू डूइंग 5+3 एवरी डे टू बिकम बेटर इन टॉकिंग टू पीपल इन इंट्रोड्यूसिंग द बिजनेस, और आर यू डूइंग 5+3 only to get a sign up? If you're doing 5+3 only to get a sign up, you will never become a good networker, actually. Never become a good networker, right? Okay. So are you doing 5+3 consistently? This is the only crux. Believe me, I have people, whether it is Vietnam or Kuwait, any other team also, right? कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल में प्लैटिनम बने हैं, 4 महीने में 20 DR किए हुए हैं। क्या खाते हैं वो? वही खाते हैं जो बाकी लोग भी खाते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि वही चीज जो बाकी लोग धीरे 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 कर रहे थे, उन्होंने बोला ओके ढक 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 ढक, ओके रोज 5+3 5+3 5+3, जैसी 20 DR हो जाते हैं तो इतना एक्सपीरियंस तब तक हो जाता है, फिर उनको हैंडल करना, फिर उनको हैंडल करना, अपने आप आगे से गाड़ी बढ़ जाती है। दे आर ऑन अ फास्ट ट्रैक प्रोग्राम, भाई। करना वही है, करना वही है, बट कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी लर्न करेंगे, जितना जल्दी लर्न करेंगे उतना जल्दी टेक ऑफ करेंगे, यू नो, उतना जल्दी टेक ऑफ करेंगे। क्या लर्न करते समय और कंसिस्टेंटली काम करते समय हर चीज के पीछे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, टैंजिबल रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब it may not give you sign up, it may not give you money, but it will give you experience, which is a bigger result than that, actually. Because आपको साइन अप मिल गया और एक्सपीरियंस नहीं मिला ना, तो साइन अप को होल्ड ही नहीं कर पाओगे आप, आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आ पाएगी, राइट? यू नो, एंड इन दिस बिजनेस it is equally important to learn how to create the team, and it is equally important to learn how to hold the team together, actually. The holding capacity, how to hold the money together also, right? Otherwise, many people earn money and then they lose it, actually. They come down, actually. Holding capacity, are you building the holding capacity as a person, actually, right? वो होल्डिंग कैपेसिटी आती है एक्सपीरियंस से, वो होल्डिंग कैपेसिटी आती है जब when you go through the processes multiple time actually for yourself, right? You know, that is called building a person, that is called building a character, actually, right? That is called working on yourself, right? Not any, everybody gets busy after having 10 15 12 people in the team in building them, actually, right? But the biggest thing is that are we building ourselves more than building anyone else, actually, right? Are you getting me? You know, so it's all about building ourselves and consistent action. जैसा मैंने बोला 5+3 is just a consistent action, right? नहीं होता 5+3 कोई बात नहीं, 3+2 करो, but consistently शुरू करो, कुछ तो शुरू करो consistently. And when you see that consistent, you can be consistent in something for a long time, and it become a part of your system, it become part of your personality, and now it is no more an effort. Then pick up something else, then pick up something else, then pick up something else. In 52 weeks, there'll be so many things which you will be doing consistently, actually, right? You will become a consistent character, right? Today also, like for example, you know, only this 5+3 thing made me realize what is the power in consistency in my first year. I kept doing that, right? I kept doing that. Then I added few more things. I'll read book, I'll go to system and all that, right? But even after started maxing out and started, you know, बहुत पैसा कमा लिया, मूव हो गए दुबई में, उसके बाद भी I was picking up some or other thing all the time to be consistent, actually, right? Then I started working on my health, but without compromising on those things which I was already doing, actually. नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं अब तो वो हो गया, उसको छोड़ देते हैं, अब सिर्फ हेल्थ पे ध्यान देते हैं। No, I was still building new markets, I was still doing my DRs till today, still building new markets, still doing all those things which I did in first year, right? But उसके साथ में और भी ऐड कर दी चीजें, because वो तो effortless होगी ना, correct? You know, whether it is my meditation or it is my workout, I started with workout, lost weight, started maintaining weight. Then after that, I said okay. Then started doing workout. Then after a few years, I started doing meditation. Then after a few years, I started doing my sadhana, my prayers. Okay, different things, right? Whatever I knew that this is going to help me, right? Okay, I started doing that, and not just for 1 day or 2 days, consistently, actually, right? And it is a part of the system now.
No matter what happens, no matter whether I'm in minus 14-degree temperature or plus 45, actually, right? I will not compromise on those things because I know I will deteriorate as a person if I stop doing those practices, actually, right? You know, so 5+3 से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, बिकॉज वो सबसे सिंपल है. अगर वो ही नहीं कर सकते तो बाकी चीजें क्या करेंगे? So my question, I lost everyone. I don't know. I can't see the faces now. Anyway, I can see only myself. Okay. So, the point is, are you consistent? Are you consistent? And the most important thing is, you will only be consistent when you are consistent in dreaming also, right? Consistently dreaming, right? Life will not be fair all the time. Life will not be on roses of bed all the time. There'll be ups and downs in your personal life, in your professional life, in your health, everywhere, actually, right? But are you becoming a victim of those circumstances, or you're still a dreamer, actually, right? You're still a dreamer, right? Some people, दो चमाट पड़ते हैं उनको, नीचे गिरते हैं, फिर वो ड्रीम करना छोड़ देते हैं, राइट? हेल्थ खराब हो गई, नो 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 नो, अब तो मैं सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दूंगा, ड्रीम छोड़ दूंगा, राइट? रिलेशनशिप खराब हो गया कहीं, तो अब तो मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगा, बाकी ड्रीम करना छोड़ दूंगा, करेक्ट? या तो अब तो मैं ये देखूंगा ही नहीं, हेल्थ के लिए जिम जाना शुरू हुआ, एक्सीडेंट हो गया, बैक हर्ट हो गई, नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं करूंगा भाई, वेट बढ़ा रहेगा चलेगा, लेकिन अब मैं नहीं तो बैक की लग जाएगी. क्यों? गिविंग अप ऑन ड्रीम. व्हाई? ओके, ठीक है, आपने कुछ गलत तरीके से कुछ किया होगा, आपने कुछ गलतियां करी होंगी, अगर वो चीज वो शैटर हो गया वो टाइम पे, फिर से ड्रीम करो, फिर से ड्रीम करो, फिर ड्रीम देखो, फिर अपने आप को इंप्रूव करो, एंड देन अचीव दैट अगेन. Achieve that again, right? And if I have to look at myself, the biggest thing which this business gave me is ability to dream, actually, right? Ability to dream. Because till the time we are dreaming, we are alive. We are living, actually. Otherwise, we are dead. We are dead, actually, right? Today also, I still dream for everything. I still dream for everything which is not working in my life, actually, right? Okay. I still dream to correct every aspect of my life which is not correct, right? Why? And positively. Okay, I don't sulk thinking, oh my God, why my life is shattered and all that, right? Why? Because there's always a learning, right? You cannot be perfect all the time. There's always a learning, right? But point is, are you consistently working to achieve that thing, right? And believe me, consistently, आप कुछ भी करोगे, उस पर रिजल्ट आना ही है, actually, right? Consistently. So first thing, check yourself. Are you doing 5+3 on daily basis? 5+3. Can I see all the faces? Possible है क्या या नहीं है? दोनों, I can only see admin and myself. Anyway, so are you doing that 5+3 consistently? Right? और क्या लगता क्या उसमें बताओ? हाँ, thank you. I can see now. क्या लगता है उसमें? 5+3 में there's only one thing which is required. You know what? Decision. और एक बात सोचो ना, अगर 5+3 कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते हम, तो आई थिंक वी डोंट हैव अ राइट इवन टू आस्क क्वेश्चन टू अपलाइन और अ गॉड व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. ट्रू. अभी कुछ लोग आगे बोलेंगे मैंने किया 5+3, 20 दिन तक किया, नहीं काम किया, राइट? 20 दिन तक किया, दैट मीन्स यू आर काउंटिंग. जब तक काउंट करोगे डेज, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा. इट हैज टू बिकम लाइक अ ब्रीदिंग. इट हैज टू बिकम लाइक अ discipline is a state of a mind. Consistency is a state of a mind. ये एक मनुष्य की मस्तिष्क की आंतरिक अवस्था है, राइट? कुछ लोगों को बहुत बाउंसर लग रहा होगा, साउथ वालों को इतनी खतरनाक हिंदी, राइट? बट समझो आप मेरे को, एंड बिलीव मी, यू विल बी एबल टू एक्चुअली अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट हम कंसिस्टेंटली नहीं हो सकते, तो फिर क्या फायदा? तो पहले तो हम बैटल अपने आप से जीते, कंसिस्टेंटली कुछ चीज करने के लिए. और 5+3 द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद. 5+3 कंसिस्टेंटली अगर हम करते रहे, ठीक है, हो सकता है पहले गलतियां भी करेंगे, कोई बात नहीं. कई लोग आके बोलते हैं नहीं मैंने किया बट वो गलत था, फिर मेरे नाम खत्म हो गए. अरे +3 भी तो कर रहे हो, नाम कैसे खत्म हो सकते हैं? फाइंड आउट द सोल्यूशन टू डू दैट. I am working with few people from last few years. Believe me, there are people
जिनको भरोसा ही नहीं था कि वो 5+3 कर सकते हैं, एक साल से एक भी दिन 5+3 मिस नहीं किया उन्होंने। अब वो उनके बिकम लाइक अ ब्रीदिंग एक्चुअली फॉर देम, राइट? ओके, अभी भी कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग थोड़े दिन करेंगे, कुछ लोग चालू ही नहीं करेंगे एक्चुअली। डजंट मैटर, डजंट मैटर, राइट? माय जॉब इज टू टेल यू, एंड इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स। आप खुद देखो, एक ओलंपिक स्पोर्ट्स प्लेयर जाता है, कितनी मेहनत करता है, रोज उठ के जाता है दौड़ने, रोज उठ के जाता है, रोज अपनी फिटनेस के लिए काम करता है। क्या वो रोज सिर्फ उस स्पोर्ट्स के ऊपर काम करता? नहीं, ही वर्क्स मोर ऑन हिज माइंड एक्चुअली, राइट? सो कंसिस्टेंसी इज नॉट, हो सकता है जब आप कंसिस्टेंट हो तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इट इज नॉट फॉर दैट रिजल्ट, राइट? बट आपका दिमाग बहुत मजबूत हो रहा है, राइट? डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ रहा है, राइट? एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। सो व्हाट, कोलैप्स हो गई टीम, सो व्हाट, कुछ काम नहीं हुआ, सो व्हाट इफ किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम है, सो व्हाट इफ यू लॉस्ट समबडी, सो व्हाट इफ एनीथिंग, राइट? Simple. Pull up your socks, learn from your mistakes, and take a second inning actually, right? Another inning, another inning. Never give up actually, right? Never ever give up, right? And that's what exactly makes you alive. Otherwise तो खत्म हो गए ना। ओके, ठीक है, आपने गलती करी, कोई बात नहीं, हर इंसान करता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसको करेक्ट करें और आगे बढ़े, करेक्ट करें और आगे बढ़े। 5 साल की जगह 10 साल लगेंगे और क्या होगा, क्या लगेगा? But consistent action, consistent learning actually, right? Even if you are earning a lot of money, whether you're a platinum, sapphire, diamond, whatever it is, right? आपके actions रोज consistent हैं क्या खुद के लिए? कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपको पता है। आप मिरर में रोज अपने आप को देखते हो, राइट? ओके, मिरर में अपने आप को देखते हो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। एंड बिलीव मी, व्हेन यू डू एवरीथिंग कंसिस्टेंटली एंड यू नो दैट कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको पता किसी से कंप्लेंट ही नहीं होगी कोई, क्योंकि आप खुद को ही इतना एड्रेस करने में लगे रहोगे ना, किसी और को से कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि अब यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ ओनली, राइट? ओके, एंड व्हेन यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन कंप्लीटली, आपको किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है आप सही रास्ते में जा रहे हो। ट्रू, एंड दैट्स द बेस्ट स्टेज टू बी, यू नो। सो पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले ये कि आर यू डूइंग दैट 5+3 कंसिस्टेंटली, यू नो। कंसिस्टेंटली मीन्स लूज मोशन है, उस दिन भी 5+3 हुआ है, करेक्ट? पार्टी थी एक दिन पहले, पूरी रात दारू पी थी, उसके बाद भी अगले दिन 5+3 हुआ। आईसीयू में हो तो भी 5+3 हुआ है। अब तो सबसे पहले ये सोच के बताओ, ये पॉसिबल है कि नहीं? वापस मुझे कोई दिख नहीं रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये पॉसिबल है या नहीं? कोई अगर आदमी, पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना कि भाई मेरे को ये पॉसिबल है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं? आई वांट टू डू दिस, ओके? बिकॉज इन दिस बिजनेस, इफ यू ओनली मेक मनी and you don't build your character, which is consistent character, which is determined character, which is stubborn character, who pushes himself more than anyone else actually, right? अगर वो कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर सकते ना, अगर तो पैसा जो कमाया ना वो चला जाएगा, मेरे से लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो आप ये, राइट? जो भी पैसा कमाया वो सब चला जाएगा, चला जाएगा मतलब खर्च हो जाएगा, धीरे धीरे करके इनकम डाउन हो जाएगी, फिर कचरा आ जाएगा दिमाग में, फिर हम ब्लेम करेंगे किसी और को, करेक्ट? एरोगेंट होंगे, कुछ भी होगा, कुछ तो भी होगा। But believe me, if you want to create a legacy, if you want to create a legacy, right, this is the only way. You need to learn to become a character who's consistent. You need to learn to become a character who never stop dreaming. You need to become a character who learn how to interact with human beings with patience. You need to become a character who will not justify, who will not judge people, who will not gossip, who will not be busy talking about others, who will just focus on himself or herself actually, right? Until the time you don't become that character, I can give you in writing, you will struggle. May not always struggle for money, but you will struggle for your own peace of mind. Sometime money will come, but peace will not be there. Sometime money is not there, peace is not there actually, you know. You will only be at peace when you learn to become a balanced human being actually, right?
okay, who's only and only focusing on himself, to be consistent in action, in thoughts, in words, actually, right? Non-judgmental, only working on himself or herself, because all the people who are there around you are there for some reason, right? To make you a better person. If you focus on them, you're you're not learning for yourself, actually, right? Simple. So point is again, 5 plus 3 possible or not possible? If it is possible, then why we are not doing it? No? अगर किसी को नहीं पता है 5 plus 3 तो समझ में आता है, बट सबको पता है, फिर 5 plus 3 क्यों नहीं करते? पूछना पड़ेगा अपने आप से। शायद इसके लिए नहीं करते हैं कि हमको लगता है ये बिजनेस जो है ना, ये लॉटरी टिकट है, हमने टिकट खरीद लिया है, थोड़ा थोड़ा कुछ डांस कर लेते हैं वहां जाके और शायद हमारा नंबर आ जाएगा। नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। शायद थोड़े बहुत पैसे बन जाए, कोई काम कर जाए तो, लेकिन मैंने देखा है पिछले 12-13 साल में, देयर वर पीपल who were not doing their duty properly. They were diamonds, actually, right? Today they don't exist. They earned money for good years, 5-6 years in the beginning, actually, right? But they don't exist. आज उनकी इनकम भी डाउन हो गई है, उनकी इनकम बंद हो गई है ऑलमोस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि उनकी टीम चल रही है एक साइड की, दूसरे साइड में भी ठंडा हो गया, राइट? यू नो, बिकॉज God will not give something which you don't deserve, actually, right? God will not give something which you don't deserve. So please understand that consistent behavior is the most important thing. The most important thing. And if the first thing to start with is 5 plus 3, which is the action. And while doing 5 plus 3, your thoughts, what is going in your head, actually, right? Okay. Kirkir leke 5 plus 3 करोगे तो भी result नहीं आएगा. Okay. And take a challenge on yourself. Can I do 5 plus 3 for 100 days, actually? Right? 5 plus 3 proper 100 days, right? Which means I will inform 5 people on daily basis, add 3 names on daily basis, and every week I will invite those 30 people and line up at least 5 plans a week. Line up matlab plan on table. Line up to shayad 10 ho jayenge, right? Okay, for 100 days, every week 5 plans will come on table. Okay, 100 days means kitna ho gaya? 3 mahine tak, right? Okay, and if that is possible, I want to create a club. I want to talk to these people only, actually, right? क्योंकि उसके बाद उनको जरूरत है और कुछ उनके सवालों के जवाबों की जरूरत पड़ेगी, राइट? यू नो, सो अगर आप 100 डेज तक ये 5 plus 3 रेगुलर कर सकते हो, then we will form a club, and every 100 days I will talk to those people and answer those questions, actually, right? कि अब आगे क्या? बट ये तो बेसिक्स है ना, इसके ये जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगे, आगे का सिखा के फायदा क्या है? करेक्ट? So that's what exactly it is. 5 plus 3 consistently are we doing, right? No, and we are we even having guts to even take a decision to do this? कोई बात नहीं, बीच में कभी एक दिन मिस हो गया, वापस शुरू करो एक से, फिर वापस जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, खुद को भी पता है, ओके? 5 plus 3 every day with 5 to 6 plans a week. That's it. Sign up. I don't know होंगे कि नहीं होंगे, but definitely you will become a better networker, right? Okay? क्योंकि जब मैं 1 साल तक ये कर रहा था ना, तो बहुत सारे साइन अप नहीं हुए थे, बट 1 साल के बाद जब दूसरे साल में साइन अप होना शुरू हुए थे ना, by that time I was ready to handle them, actually. I was an efficient upline who could guide them on everything, right? Because जो 1 साल में जो एक्सपीरियंस मिला था without sign up, through those actions, that made me a better upline, actually, right? In the second year, for all those people, actually, right? And second year में जितने लोगों ने काम शुरू किया, वो सब मेरे close people थे, right? How it was possible for them to listen to me? Whether it is Sharfun, or it is Kavita, or it is Bijoy, or it is Vivek, or anybody, actually, all those people were close to me. They were my friends, and it is impossible to be like an upline with friends. But I was an upline because I was having experience of that 1 year, so much experience that they were getting some value from me. That's why they were listening to me, actually, right? Simple. That's the reason, right? I was not giving gyan, it was from the experience. So 5 plus 3, if you want to become a better downline, 5 plus 3. If you want to become a better upline, 5 plus 3. If you want to become a better networker, 5 plus 3. If you want to become a better human being, 5 plus 3 consistently, actually, right? That's the first thing to start with, right? Which is not depending on any third party. Any third party. मैं नहीं बोल रहा हूं कि sign up करो, right? वो third party है ना.
वो तो साइन अप करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, राइट? बट 5+3 तो कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा, अच्छा ढंग से करना है, काम पूरा करने के लिए नहीं करना, टालने के लिए नहीं करना है। 5+3 और कितना टाइम लगता है? कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, कितना टाइम लगता है? 5 कॉल करने के लिए 15 मिनट लगेंगे। 3 मिनट से ज्यादा वैसे भी कॉल नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है, थोड़ी ना उसके साथ में मूवी की स्टोरी डिस्कस करनी है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 3 नंबर कलेक्ट करने में क्या लगता है? अगर फोकस है, अगर मैं आपको बोलूं रोज 5+3 करोगे अगर आप, रोज, तो हर रोज का $100 मिलेगा। अभी कितने लोग करेंगे पूरे साल भर तक? $100 हर रोज का, मतलब 300 दिन में कितना हो गया? $300,000, राइट? तो 3 लाख डॉलर हो गया, राइट? करेक्ट? $100 रोज का मिल रहा है, 300 × 100, $30,000, यू नो, गेटिंग मी, राइट? तो अगर वो मिलेगा तो करेंगे, बट आप करोगे तो वो डेफिनेटली आएगा। बट अगेन, इफ यू आर नॉट डूइंग इट, द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं आज तक डिसाइड किया? तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस में मेकिंग इट बिग इज अ विशफुल थॉट और अ बर्निंग डिजायर एक्चुअली, यू नो। गुड पार्ट इज दैट इस बिजनेस में आप बहुतों की मदद लेके भी आगे बढ़ सकते हो, बट बिलीव मी, पिगी बैंक बन के नहीं बढ़ सकते हो आप आगे, यू नो। गिनी पिग बन के नहीं बढ़ सकते हो आगे, किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं बढ़ सकते हो आप। ठीक है, बाकी लोग आपकी मदद कर सकते हैं आपको पुश करने में, राइट? लेकिन ज्यादा एफर्ट तो आपको ही लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा, राइट? ट्रेन का इंजन तो आपको ही बनना पड़ेगा, बोगीज आपको नहीं धक्का मारेंगे, राइट? या दूसरा इंजन आपको खींच के नहीं देगा, आपको इंजन तो बनना ही पड़ेगा। Are you becoming an engine? And second thing, even if you have a big team, even if you're earning good money, even if you have, believe me, if you stop doing these things, basics, your team will stop respecting you. Then there'll be an issue. Then that team will not want to work with you actually, right? And then you will not get respect actually, right? Simple. So my funda is very clear. If one team become big and they're as good as me, I will start creating other team actually, right? Simple. Why? Because two reasons. If I don't create another team, I will poke the old people. And they are grown up kids, right? If I poke them, they will not like it, right? Okay? And then they will say, अरे सुनो आप मत बोलो ये सब, आपका जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है, right? पहली चीज। दूसरी चीज, if I don't create a new team, I will not have any ground experience. I'll not be able to add value in the whole team, right? Third thing is, when the old team become big, some people become full cup and they don't listen actually, right? Okay? So do you want to depend on them and keep poking them? If you're creating another team, ठीक है, वो गिर भी गए ना तो दूसरी टीम आपको संभाल लेगी, राइट? वो गिर के ही सीखना चाहते हैं लोग, कुछ लोग तो गिर के सीखने दो, राइट? हाउ you're detached, you know. So that's how exactly you have to keep creating new teams all the time actually, right? Without 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 sotela vyavahar with the old team, without sotela vyavahar, right? They are also your kids, but they are grown up kids. They need a different kind of a learning in a different style. New people need a different kind of a learning in a different style, right? But the best learning come when they see upline in action, when they see upline doing 5+3 regularly, when they see you doing 5+3 regularly, then only exactly it happens, right? And you will not be frustrated to change people because you are already doing a job, right? You will tell that I am doing, आप करो, करेंगे तो भी अच्छी बात, नहीं करेंगे तो भी आप तो कर ही रहे हो, right? So if you are not at 20 DR yet and you are still not doing 5+3, right? तो अपने आप से पूछो कि हम कर क्या रहे हैं, हम करते क्या है रोज? इधर उधर हंटिंग करते हैं, इधर उधर डाउनलाइन से बात करते हैं, बट क्या बात करते हैं? यही तो बेसिक काम है ना, राइट? सो कंसिस्टेंटली 5+3 is a mantra, and then this consistency has to go to every aspect. Consistently attending system, consistently making checks, consistently doing DRs, all those things, but everything starts from 5+3 consistently. This is like अंडे में से निकलता चूजा और 5+3 कंसिस्टेंटली उसका होना चाहिए। अब क्या सब लोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सबके ड्रीम की कैपेसिटी अलग है, सबके ड्रीम की इंटेंसिटी अलग है, किसी का विशफुल थॉट है, किसी का बर्निंग डिजायर है। किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। कोई आज नहीं करेगा, बाद में करेगा, कोई आज करेगा थोड़े दिन फिर छोड़ देगा। तो दिस इज अ लॉ ऑफ एवरेज एक्चुअली, राइट? यू नो, दिस इज अ लॉ ऑफ एवरेज। बट आप खुद करते रहोगे कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? It's the most important thing. Are you organized consistently actually, right?
सब कुछ ऑर्गेनाइज करके होता है। आज भी पीपल थिंक ओ he's achieved everything and all that, right? आज भी I have diaries which I carry every day, right? Every day. हर रोज मेरी डायरी में लिखा होता आज का काम किया, आज से एक हफ्ते बाद तक की ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, दिन में 2 या 3 चीजें करता हूँ, बट डायरी में लिखा होता व्हाई consistent behavior of being organized. This is a new thing which I learned in last 2 years after pandemic, right? I was not that organized. Consistently, right? Consistently. I don't have that much of work, but still I'm organized, right? You have so much of work. You have to go to a job, you have to do 5+3, you have to manage downline, you have to manage upline, you have to manage administration, everything. Still, many of you must not be having a schedule of the day actually. और some people start कल से पूरा लिखेंगे, 2-3 दिन के बाद वो डायरी कहाँ जाती पता नहीं। मैं भी ऐसी था काफी सालों तक, करेक्ट, काफी सालों तक ऐसी था, बट शायद अगर जैसा अभी हूँ वैसा पहले होता तो और भी कहीं पहुंच चुका होता, करेक्ट। सो माय पॉइंट हियर इज consistently pick up one by one things which will build your character. And to start with, number one thing is 5+3. If you want to really build your character as a networker, 5+3. Okay. And as I said, consistent action is 5+3. Consistent thoughts I already spoke about, right? And consistent words. मुंह से भी ना गलत चीजें मत निकालो, तथास्तु होने वाला है। मन में भी मेहनत करो, right? And these are the only three. As I said, I was a regular guy. These are the only 3 things which helped me to be where I am today, right? And these are the things which will help me to be where I want to be eventually, right? The journey is not yet over. You will see me around all the time. You will see me around. I may not be able to see you, but you will see me all the time around, right? I'm not a person who want to retire from this business, because this is not a business for me. This is a way of life, correct? This is a way of life. And, I will keep dreaming. I will keep dreaming bigger, and I'll keep dreaming not only about the houses, about the cars, about this, about maybe different things actually. Right? Because when we dream, we know we have to improve ourselves, and that builds our character actually. Dream to ऐसे side में पूरा हो जाता है, but what you become is more important than what you get actually. So dreaming is the most important thing. Is the most important. Easygoing person, right? Very easygoing person. No matter what happens. Okay. So again, consistently balance in your thoughts, in your action, in your words, everything balanced, right? Consistently. So try to start with 5+3. And as I mentioned, 5+3, जो लोग 100 दिन तक consistent करेंगे, I am telling Shipra here, I'm ready to talk to them. I'm ready to talk to them, and I will not talk one way. Then I'm ready to answer their questions. Okay, so that they get next 100 days का कि आगे और क्या करना है, आगे और क्या करना है। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 दिन में पैसे कमाना शुरू कर दोगे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पैलेस बन जाएगा 1 साल में, बट मैं ये बोल रहा हूँ इस तरीके से काम करेंगे तो जो भी खड़ा होगा परमानेंट खड़ा होगा, फाउंडेशन तगड़ी बनेगी। राइट, जब फाउंडेशन तगड़ी होगी तो आपकी बिल्डिंग दिखेगी नहीं शुरुआत में, क्योंकि फाउंडेशन डल रही है, राइट, बट जैसे ही बिल्डिंग ऊपर आना शुरू होगी देन धड़ 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 ऊपर बनेगी। राइट, फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज who is the character who's building this actually? You are the character. So are you building yourself first actually? क्योंकि आपके कंधे पे तो पूरी बिल्डिंग खड़ी है ना, करेक्ट। कंधा मजबूत नहीं करेंगे और बिल्डिंग खड़ी करते जाएंगे तो गिरेगा ना एकदम, करेक्ट। So please understand, consistent action, thoughts and words are the only things which is to be built in the beginning, right? And that consistent character eventually, will learn so many other things, right? Correct. So I have nothing more to say, but this is what exactly, and consistently keep dreaming. Keep dreaming. अगर आपको कहीं बहुत बुरी तरह लात पड़ी है ना, मत सोचो कि ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, फिर से अटेम्प्ट करो, बट पुरानी गलतियों को रिपीट मत करो, करेक्ट। तो और गलतियां भी अज्यूम मत करना कि ये गलती क्या, उसका प्रॉपर डायग्नोस करना कि ओके आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, ओके आई वाज नॉट पुशिंग माय सेल्फ, आई वाज, देन वैसे होगा। बट सब कुछ फिर से खड़ा हो सकता है, whether it is your business, or it is your money, or it is your relationship, or it is your social status, every damn thing actually, every damn thing. Never ever stop dreaming, because dream is the biggest medicine for any kind of a wound actually, right? Correct. So this is what I wanted to share. Very simple. As I say, I'm still simple, I'm still regular guy. Okay. The only thing which I can talk about is what I did, which is being consistent, right? Which is being consistent, nothing else, right?
So you don't have to be extraordinary. You don't have to be over smart. उल्टा वो गलत उल्टा काम करेगा, right? You have to be innocent but sincere to build yourself. And consistency is the only thing which is a beginning start point to build yourself actually. Done. Thank you very much. I love you. And I'll see you after 100 days if you are consistent, right? Thank you.